Good afternoon to all of you. Today we are here for our virtual biodiversity trip to Yamuna Biodiversity Park. And today we are very fortunate to have Dr. Fayad sir. He is a senior scientist over there. We have also Preeti ma'am with us, who is a nature education officer at Yamuna Biodiversity Park. Sir, we have students from all the courses, starting from BA honors and BCom honors, and BSc Computer Science honor students are there with us. So, sir, we welcome you all, and we will be very delighted to hear from you. Sir, please. Thank you so much. Actually, it is wonderful to see that I'm interacting with your student, and thank you so much for inviting me. But it is very unfortunate that the subject on which we would have interacted and seen, not feel it, and it, important question, that why that virus has created so much of problem. If you scientifically, if you look at it, our survival largely depend on a complex ecosystem. When you have a very complex ecosystem, then most of the time these viruses get diluted within the system. But due to various development, when you fragment the system, ecosystem, and make it simplified, and only then these viruses tend to jump out and create problem for the human beings, what is happening today across the world. So it is pertinent to mention that how Delhi functions. In fact, when you look at Delhi, Delhi has two life-supporting landscape, River Yamuna and Aravali Hill ranges, and both are suffering. In fact, when you look at river, which covers about 50 to 52 kilometers, but unfortunately, when you go closer to river, it would be very difficult to touch the water of River Yamuna. And why? You know, because the moment river crosses Wazirabad, quickly river becomes a sewer. And the biggest sewer, that is Najafgarh drain, once upon a time, that was a Sahibi river, bringing lot of water from Aravali Hill ranges to River Yamuna, now bringing sewer, raw sewerage to the River Yamuna. And this is the change took place over a period of time. And the other life-supporting landscape, that is what you call Aravali Hill ranges, which covers about 7,777 hectares of area in Delhi. When you go closer to it, you will see that there is no native vegetation or very little native vegetation, and it is full of Prosopis juliflora or Vilaiti kicker, which historically came from what you call Mexico. Britisher brought it 200 years ago, and now it is creating serious problem to the region. So it is very important to see that should we keep talking all these things, or should we intervene something to create life supporting landscape more vibrant, which can give you what you call very important air to breathe, and another important thing, that is water to what you call drink. So therefore, we must understand and argue that what kind of development you are looking for. Most of the time, we look at the government for broad road, multi-story buildings, hospitals, metros, and you got everything in your hand. But unfortunately, we never ask a river with blue water. We never ask a river which had what you call dolphin jumping inside historically. We never ask a river which has 6 to 7 species of what you call turtles. We never ask. So why we always look at something which is probably which require only when you survive. And the first and foremost thing for your survival is air to breathe. So what we do so that we can get continuous air to breathe. And nobody can produce air and water. Unfortunately, when you look at science so far, could not come to a level which can give you opportunity to produce air and water for yourself. So what is the solution? Solution is nature again. You have to go back to nature. And
How you go back to nature? Science suggests that for going back to the nature, what you do, you go for ecological restoration. And that ecological restoration can only possible when you put a lot of effort. And probably that is the reason we are interacting with you to understand that, you see, look at me, I am 52 years of age and 10, 15 years left in me. But you have to survive for another 60 years, and for which you need enough oxygen and enough water to stay on this planet Earth. So how we'll do it? We'll go for ecological restoration. When you look at ecological restoration, it's very interesting to understand that ecological restoration is a very important science where you help an ecosystem which is degraded, damaged, or even lost. So how you will help? You need to see, look, your two life supporting landscape, that is River Yamuna and Aravali Hill ranges, that what happened to River Yamuna and what happened to Aravali Hill ranges, how you bring back those, what you call, uh, uh, ecosystem processing life, so that these ecosystems become functional. So in we have network of 7 biodiversity park. One is Yamuna, which Preeti will take you around, and biodiversity park are place where we have created a biological community with the help of assemblage of species from the particular ecological range. What do you mean by it? When you look at the in ecology, succession takes a lot of time. And what we did scientifically, we assembled the species in different layer, like top canopy, middle story, in ground vegetation, in a way that succession can be reduced only to 5 years and become functional ecosystem. So my objective is simply to ignite your mind that you have to argue that what kind of development you are looking for. A development which brings you COVID-19, or a development which brings you safe drinking water to your household. Because it is you need to decide that what kind of development you require, and accordingly you fight with the government. Because most of the time when government comes, they are dumb and deaf as far as environmental issues are concerned. Nobody think about, because nobody think about air and water. The reason is government come for a very short time, and in short time they try to show their development, and development can only be shown through what you call roads and buildings. But roads and buildings can only be utilized by human beings in the survival. And we will congratulate organizers, and I will request our student, it is my appeal that you please fight. How you will fight? You have problems, you have solution like biodiversity park model, which gives urban sustainability and resilience. So you need to write to the concerned authority for it, right? Thank you so much. I am over to Preeti. Preeti will take you to the tour. Thank you. Thank Thank you you very so much, much, sir. sir. Thank you very much, sir. I think sir is saying something. Okay. So a very warm welcome to all of you, and thank you to Dr. Fayaz, who has recently interacted with all of us, and have given us the idea that how different developmental projects across the world, or specifically to India or our city Delhi, is hampering the environment. And we all know that different developmental activities are going around, like daily few things come across in front of us, either through newspapers or the news channels. And there are different activities like construction of a third ring road in Delhi, which is supposed to which will supposed to cut down thousands of trees while taking that route. So all of these things make us sad that where we are leading, right? And on the same hand we want the development, and on the same hand we want our environment also. So how this work should be done in a balanced way? So this park is a very interesting model to see, and you will find that yes, there are solutions for the problems. And this park is created very beautifully with the right scientific inputs, and it was all of the degraded and barren land when this land was given.
So how this work was done, what are the different ecosystem services of Yamuna Biodiversity Park, and how the people of Delhi, and especially the people who are living around this area, they are getting benefits from it. What are the different activities that park organizes, and how you can connect to this park. This all we will be sharing through this virtual mode. So I'll be sharing my screen, and if there is any issue, if you are not able to see, if the slides are stopped, so you can interrupt in between. You can write in the chat box. Okay, so I'm sharing it. Hope it will be visible, and this presentation will be a smooth visit for you all. Sonam sir, please let me know my first slide is visible to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Right. So this is the main entrance of Yamuna Biodiversity Park, and this park was created in the year 2002 when a barren piece of land, which was earlier used as different purposes like for agricultural fields and for different activities by the local people, but due to excess use of the land and use of different things and some of the other issues, this land became barren. We will discuss what are the reasons of the degradation of this land, and this was like a rejected piece of land by the local people. So in year 2002, Delhi Development Authority and University of Delhi and CEMD Department, Center of Environment Management of Degraded Ecosystem, they collaborated and they thought that they will do some work on these piece of land, and they will try that if they can restore these pieces, and if they can come up with some of the good things, right? So I'll be sharing some of the glimpse of the park. So this is the top view of Yamuna Biodiversity Park. This is very small portion that you can see here. The park is spread in a very big area. It is 457 acres. This is another view, and this is a very large water body. This is wetland, which is spread in 100 acres of area. And this map will make you more clear that where is this park located. So this is there is some disturbance in between. If somebody's mic is on, please mute it. Yeah. So this is River Yamuna, which is coming from Haryana and taking a long run in Delhi around 52 kilometers and leave Delhi from Okhla and goes to Uttar Pradesh. And this park is very near to River Yamuna, on the floodplains of River Yamuna. And this is phase 1 of the park, which is in 300 acres. So the total area is 457 acres, and both the phases are connected with a corridor. You can see the corridor is there. It is a small passage from where basically the movement of animals and other mammals it take place from here. On the right side, you will also find Jagatpur Band. This is a highly elevated road which was constructed long back in 1980s when there was huge flooding in Delhi, and all these houses and these areas, they were drowned in water because they are constructed on the floodplain only. So it is a normal character of a river. When it receives good water in monsoon, the water will come out, and the nearby area, it is supposed to be empty because it is a floodplain, so it will absorb a lot of water. A few wetlands were there, but what people see, they start making constructions and different things on the open areas. So this land was constructed by the Flood Irrigation Department and Government of Delhi, so that keeping in mind that it will prevent the water coming to this area and people can live safely in this area. So when they constructed this road, so what happened to especially in this area, there was no connection from the above, right? And all the salt and silt, it get deposited here for a long period of time. As we all know, I mean, we all have studied, and when flooding take place, or when river pass through some area, all that minerals and other deposits, they get settle at floodplain area and makes it fertile.
That's why the land is very fertile. So what happens, there was excess of salt in the river here, and because of that the land became barren. So when in 2002, when this land was given, it was like this when this piece of land, 157 acres of land was given, it was all barren, and all you can see, there was large patches of salt there, with very few plants were growing from there. And when our team they visited that area, they found that the salinity was very high, and the saplings which they planted within 10 days. So they tested the soil and they found that the salinity was very high, and it was very difficult to grow anything in that soil. So but few plants were growing when they collected those plants. When they identified those plants, Excuse they me, ma'am. found that these plants were helophytes, chemical or Ma'am, any other. Yes, ma'am, your voice is not audible clearly. बताइए. It's breaking. हाँ बोलो, I can hear you. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, you are not audible clearly. मैम थोड़ा सा वॉइस वो इंटरफेयर हो रहा है मतलब. Now it is clear, sir. Yes ma'am, yes ma'am. It is clear. Okay. So we were discussing that how we use the natural ways to take out salt from the soil. And one of the way was that we introduced a lot of helophytes. For that, we did a lot of search in the fields. Practically, the team went to different parts of the Delhi, and even in different states, to find out that what are the different plants which can grow in the salty region. And they introduced those plants, and they found that yes, within some years, those plants were able to take a lot of salt from the soil. And we call it phytoremediation, right? And how that salt was taken out from the soil, and the soil was having less salt in it, right? And after that, we were able to introduce many of the grass species here, and we thought that different grass species will when different grasses will be there, it will improve the quality of the soil. Okay. This you can also see that wherever the grasses are there, there is moisture in the soil. There are different activities of insects you can see. And grasses also brings lots of insects and other creatures with it. And they also fix different micronutrients for the soil. So overall it improves the quality of the soil, it holds the soil, and it prevents soil erosion. It actually I mean, it reduces the surface runoff. So whatever the rain was coming, the water was all going into the soil. So we mind that it will attract lots of insects, then it will attract lots of herbivores. Then slowly and slowly we will be able to increase the members in our food chain, and we will make it more complex. So this is one species of grass which is Sporobolus. And uh, this grass is eaten by a lot of herbivores. And yeah, this is another grass which is vetiveria. Ma'am, your voice is Excuse me, breaking. ma'am. And in Sorry. Yes, Hindi ma'am. we call it kush grass. Yes, ma'am, voice is not clear. Kusha.
Excuse me, ma'am. I'm checking it again. Wait. I think there is some issue with the network. Otherwise, it was going well. The picture is clear. I mean, the screen which I'm sharing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. At times, voice get interrupted. Okay, maybe because of network. Because in park, I mean, although it is a Wi-Fi, but it I the understand. I understand. yeah, but still, I'm trying it again. ओके, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि कुछ ज्यादा ही पोर्शन मिस हो गया, आपको नहीं बिल्कुल समझ में आया, आप ऐसे ही इंटरप्ट करना. ओके, one thing I can suggest is that यदि हम full screen नहीं करते हैं तो वो screen still नहीं होती है. At times मैंने ये feel करा है. यदि हम full screen ना करें ना तो things easily deliver हो जाती हैं. Full screen करते ही कभी-कभी जो है hang होता है वो live पर. तो आप मैक्सिमम स्क्रीन को ना करके ना मिनिमाइज करके भी स्क्रीन दिखेगा तो आई थिंक इट विल गो फास्ट. अच्छा. लेट मी चेक सर. बट सर ये फिर बहुत छोटा दिखेगा आपको. मैम अभी तो फुल स्क्रीन ही नजर आ रहा है. लेट अस डू दिस वे ओनली बिकॉज वो बहुत छोटा दिखेगा सर, फिर समझ नहीं आएगा. ओके, आई होप माई Okay, ma'am. साउंड इज. हाँ, अभी फुल आ रहा होगा सर, मैंने दोबारा से फुल कर दिया इसको. ओके, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि मैम कुछ जैसे आप मेजर थोड़ा सा मिसिंग हिंदी है में या भी वॉइस बोलेंगे, बहुत थोड़ा ब्रेक सा हो आप रहा है, फिर से मुझे बोलिएगा. आई बोलेंगे तो रिपीट, चीजें राइट. थोड़ी सी ज्यादा So क्लियर हैं. this is how we introduce different grasses. Two big grasslands here. Right, right. बिल्कुल सर. Right. So we have two big grasslands here and rangelands here. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि we have introduced Ma'am, your voice. different grass. This is Desmostachia, and इसको भी हम कुशा बोलते हैं हिंदी में, and it has a lot of religious attachments with the Hindu religion. कुश पे बहुत सारी कहानी है. You can read. किसी को भी नहीं दे रहा या किसी एक का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम अब आ रहा है, अब आ रहा है. सोनम सर प्लीज थोड़ा क्लियर जी. करो, मतलब बिल्कुल यस भी यस. नहीं 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 सुनाई मैम, दे रहा, मैम बहुत थोड़ा ब्रेक हो थोड़ा रही सा है आवाज. इंटरफेरेंस है, थोड़ा सा ब्रेक है, लेकिन आ रही है, वॉइस आ रही है, रुक रुक के आ रही है बस. ओके, ओके, राइट. राइट, आ रही है ना? राइट. वो आज कनेक्शन थोड़ा सा है सर, ऐसा लग रहा है मुझे. मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अदरवाइज कई तो बार बिल्कुल मैम, ठीक ठाक जी जी मैम, मैं कई बार करता हूँ कि फोन से ज्वाइन कर लेता हूँ और बोलता मैं फोन से हूँ और स्क्रीन जो है लैपटॉप से रहती है, उससे भी कई बार चीजें सॉल्व हो जाती हैं कि ओके. वॉइस सो क्लियर रहती है. वी इफ यू विल विश. मूव ऑन टू अनदर ग्रास. So this is Sancharous grass, and this helps in absorbing. Be fine. So ये दिक्कत अभी आएगी सर मैम. I'm trying. This grass helps in absorbing or creating a lot of micronutrients from the environment and fixing it for the soil. So a lot of uh,
help this grass is giving, and also this is palatable, इसको herbivores खाना भी पसंद करते हैं. Next area which we created was Conservatory of fruit plants, and this area is having a lot of fruit yielding trees inside, and on both sides you will find a lot of native trees here. और इसको जो बनाया उसका रीजन ये था कि यहाँ पे पहले बहुत सारे fruit yielding trees थे, राइट, उसको हम ऑर्चार्ड भी बोलते हैं. तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे फ्रूट्स वाले ट्रीज दिखेंगे जो आपको locally बाहर, each and every plant or tree or grass species which is planted here is we have kept in mind that it is a flowering आएगी तो बहुत सारे आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया मैम का ना. यस सर, वो दिख नहीं रहा मैम. वो थोड़ा सा ना दैट एरिया इज सराउंडेड बाय ट्रीज, तो लेट्स सी. हाँ हाँ, वहाँ पे कनेक्शन का प्रॉब्लम है वैसे. थोड़ा सा प्रॉब्लम है. मैम आर यू देयर? हाँ जी सर, मुझे पता ही नहीं चला, शायद मीटिंग लेफ्ट हो गई थी. अब सर स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम. यस मैम. सोनम सर? जी मैम. मैम हो गई. Right. So we were discussing this kirni tree. This is known as Manilkara hexandra, right? इस पे yellow color के small fruits. Yes, so you will find small yellow color fruits on this tree in the month of March, और ये जून तक आपके रहेंगे, राइट? Just right. So इस पे आपको जैसे अभी फरवरी के बाद से मार्च में इस पे आपको फ्रूटिंग दिखेगी, एंड दिस ट्री इज हैविंग हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यूज, दिस फ्रूट इज हैविंग. और लोकल एरिया में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत प्लेन पे ये ट्री पूरे पे दिखता था, बस सिर्फ कटिंग ट्रीज. एंड देन वी हैव मैम स्क्रीन नहीं दिख रही. सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? मैम ब्रेक होके आ रही. मैम इफ यू विश आप एक बार फोन से भी ज्वाइन करेंगे ना तो वॉइस उसमें क्लियर आ जाती है कई बार. हेलो मैम आवाज आ रही है आवाज.
मैम अभी फोन से भी लॉग इन करके देख रहे हैं, लेट्स सी। जी मैम। प्रीति मैम अब आवाज आ रही है आपको? सर आपको मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ मैम अब क्लियर है, अब क्लियर है। आप बस जो अपना लैपटॉप है उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तो बोथ विल बी देयर, वॉइस एंड। जी सर वो म्यूट कर दिया मैंने। और मैं अब नाउ आपको यू शेयर योर स्क्रीन। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज तो बहुत ही ज्यादा नहीं प्रॉब्लम आ कोई रही बात नहीं मैम, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, है। कभी कभी प्रॉब्लम आता है। समटाइम इट हैपेंस इन द जी पास्ट, मैम, बट जी मैम, वो हो जाता है थोड़ी देर में जी कनेक्ट जी। ना। राइट सर आपको स्क्रीन हाँ मुझे भी दिख रही है। खैर हाँ ठीक है। मैम इट इज विजिबल, विजिबल। Ma'am, यस मैम हाँ इट इज जी बताओ। विजिबल। आप हाँ ma'am, if you don't mind, can you start from the previous screen, from the previous slide? Ma'am, because हाँ हाँ your बिल्कुल voice is बिल्कुल। so much breaking that we are not able to understand. Thank you so much, जहाँ से ma'am. नहीं समझ में आया मुझसे पीछे चलते हैं। राइट कहाँ से बताओ? अभी थोड़ा सा फ्रूट प्लांट्स। ओके आई हैव जस्ट चेंज द स्लाइड, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू रीच टू यू। Yeah, so so we were talking about this conservatory of fruit plants. Okay, so पहला आपने मॉड्यूल देखा कि grasses कैसे introduce करी. Next was to introduce the fruit yielding trees, right? And on both sides when you walk on the trail, I think ये वीडियो थोड़ा सा डिले है कुछ इधर आने में ना, because yeah, right. So on both sides you will find the fruit yielding trees in the area, right? And ये सारे जो fruit yielding trees हैं ये बहुत ही well planned उससे लगाए हैं. These all trees belong to the trees of Delhi, and they are important trees from the forest community of floodplains of Delhi, right? Just a second. Yeah, next is our this khirni tree जो आपने अभी देखा था, ठीक है? And this khirni is having yellow colored fruit from March to the till June, right? And अभी आप देखोगे तो इस पे birds जो हैं वो बिल्कुल ready हैं. This was taken in the month of November. Then we have tamarind. So all these fruit yielding trees. Sir आपके यहाँ वीडियो चल रही है या? यस मैम, यस मैम। Okay, so all these fruit yielding trees they help they help in formation of a habitat, like जैसे आपका जब आप आपके fruits होंगे, then your birds and animals will prefer to come, and उन पे बहुत सारे nesting का space है, resting का space है, और nesting का material उनको मिल जाता है, right? So उससे क्या होता है, they will stay there for a long period of time. And then we have this one is chiku, you can see, right? So these days a lot of chiku are there all over Ma'am, trees. ma'am, your slide is not changing. मैम बोर्ड वाली स्क्रीन बस दिख रही है कि मतलब वो एक थोड़ा सा स्लो है, हाँ थोड़ा स्लो। बोर्ड है ट्री। अब तो ये अब ये ट्रैक आ गया होगा, है ना, फ्रूट कंजर्वेटरी वाला। यस जी जी मैम, जी मैम। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको चलने देते हैं, इसको चलने दो। थोड़ा सा लैग है पीछे ना, मतलब मैं 2-3 स्लाइड आगे आ गई इसमें। हाँ देखो ये वाला जो ट्री अब स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज खिरनी, ठीक है? और आप कभी जैसे मार्च अप्रैल में आओगे ना, तो इस पे येलो कलर के फ्रूट्स आपको दिखेंगे, और ये बहुत मीठे हैं खाने में।
ठीक है। तो जब इस पे फ्लावरिंग होती है तो बर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, ये इंसेक्ट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, और जब फ्रूटिंग आती है तो बर्ड्स बहुत आते हैं। ये आपका इमली आ गया, देखो टैमरिंड, ठीक है, दिस इज योर टैमरिंड। कोई बात नहीं, जिस स्पीड से इसमें आ रहा है ना हम उसी तरह डिस्कस करते हैं। ये आपका देखो चीकू है सो इन दिनों जैसे चीकू बहुत है ट्रीज पर, राइट, और बहुत सारे बर्ड जो हैं, स्क्विरल्स वगैरह, वो बहुत प्रेफर करते हैं इनको खाना। तो दीज ऑल फ्रूट्स दे ऑल आर एक्सक्लूसिव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे कोई इसको तोड़ेगा नहीं, देयर आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। और ये वाला जो ट्री है देखो, इसको भी आपको थोड़ा सा और क्लोजअप आएगा नजर, ये है कैथा का पेड़। आप में से किसी ने शायद खाया भी होगा, जो बच्चे यूपी में या छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ठीक है, इस बेल्ट से हैं, वहाँ पे इस फ्रूट की चटनी भी बनती है। ये बहुत खट्टा है खाने में, कवर अंदर से उतना ही पल्प है इसमें, और इसको एलिफेंट एप्पल भी बोलते हैं, बिकॉज एलिफेंट इज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग दिस फ्रूट, ठीक है। तो ये भी आपको वाइल्ड में मिलेगा यहाँ पे। एंड इस ट्री की जो लीव्स हैं देखो, अब आपका प्लांट सिर्फ एक हेल्प नहीं कर रहा, इसकी जो लीव्स हैं उस पे लाइम बटरफ्लाई जो है वो एग लेइंग करती है, और बटरफ्लाईज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इकोसिस्टम के लिए, है ना, वो पॉलिनेशन करेंगी, वो फूड चेन का पार्ट बनेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसी तरह आपको बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट ट्रीज दिखेंगे जो बाहर नहीं भी दिखते, ठीक है। और मेनली जो हमारा सिटी में जो प्लांटेशन होता है, जो अर्बन पार्क्स होते हैं, उनमें बहुत ही कॉमन ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक है। और वो इस तरह के जो फॉरेस्ट कम्युनिटी बनाए वैसे ट्रीज हम लोग नहीं लगाते, वो मेनली ऑर्नामेंटल होते हैं ना। और बट यहाँ पे इस चीज को जो है देखा गया है, राइट। अब ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना अकेशिया निलोटिका ट्री है, बबूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस होल ट्री इज वेरी हेल्पफुल इफ यू सी द बार्क। अगर आप इसकी बार्क देखोगे तो बार्क में ही बहुत सारी मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आपने देखा होगा बबूल का पेड़ आपको रोड साइड पे भी बहुत जगह दिखेगा। बार्क में ही जो है इसके इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे बबूल टूथपेस्ट में जो है वो एक्सट्रैक्ट चलता है, ठीक है। और ओवरऑल जो है इसकी जो पॉड्स आती हैं, जो फ्रूट आता है, दैट इज लव्ड बाय मेनी ऑफ द स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। और इसकी जो ट्विग्स हैं, जो ड्राई ट्विग्स हैं इसकी, दैट इज यूज्ड बाय डिफरेंट बर्ड्स फॉर मेकिंग द नेस्ट, राइट। और बबूल का जो है अकेशिया का एक उसमें से गम भी सिक्रेट होता है, जिसको हम गोंद बोलते हैं, विच इज एडेड इन डिफरेंट स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स, ठीक है। और उसको विंटर में बहुत प्रेफर किया जाता है खाना। नाउ द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी विजिटिंग इज आवर वेटलैंड एरिया। सो दिस इज द वे वेयर वी गो टू आवर वेटलैंड। एंड नाउ व्हाई द वेटलैंड इज इम्पोर्टेंट, अब आप देखोगे ये आया डीप वेटलैंड यहाँ पर, ठीक है। इन दिनों यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, and this wetland is very popular because it invites or it attracts lots of resident birds as well as migratory birds. अब now what is a wetland? Wetland क्या होता है? Wetland एक ऐसा एरिया है जो आपको रिवर्स के पास मिलेगा, फ्लड प्लेन्स में मिलेगा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ईयर में वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा स्टैंडिंग वाटर भी मिल सकता है, एंड आपको मॉइस्ट सॉइल भी मिल सकती है। सो अभी 2 फरवरी को जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे है, राइट। सो शेयरिंग द लिंक विद सोनम सर, और अगर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर फ्री एट दैट टाइम, सो आप उसको ज्वाइन करिए। आप समझिए कि वेटलैंड्स क्यों जरूरी है, और दिल्ली में पहले वेटलैंड्स का क्या स्टेटस था, वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो थोड़ी तो अभी हम यहाँ समझेंगे। और अब आप देखो ये वेटलैंड पहले यहाँ पे नहीं था, यहाँ पर जो है सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड था। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसा मॉइस्ट पीस ऑफ लैंड था। आप फर्स्ट स्लाइड में पहले यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे क्योंकि ये फ्लड प्लेन है तो ऊपर से तो पानी आपने देखा रोक दिया, हमने जो रोड बनाया, जो गवर्नमेंट ने जो रोड बनाया, बट डीप इन द एक्विफर्स, ठीक है, वो एक्विफर जो है कनेक्टेड है अंडरग्राउंडली। सो जब भी रिवर यमुना में वाटर लेवल राइज होता है, अभी भी जैसे मानसून में, तो आप देखोगे वेटलैंड्स का भी लेवल जो है वो राइज हो जाता है, ठीक है। बारिश तो आती है यहाँ पे, बट अंडरग्राउंड जो है वाटर का मूवमेंट जो है चलता है। सो जब 2004 में जब हमने ये
ये लैंड देखी तो इट वाज वेरी मॉइस्ट, और यहाँ पे कुछ हमें इंडिकेटर प्लांट्स दिखे, कुछ इंडिकेटर स्पीशीज ग्रासेस दिखी, ठीक है, और जिनसे हमें आइडिया लगा कि अगर हम यहाँ डिग करेंगे तो यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल इज वेरी गुड। और उसके बाद यहाँ पे जब हमने मार्किंग करी तो हमने देखा कि यहाँ तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ऊपर था, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये दिस इज 14-15 फीट डीप इनसाइड, दैट इज व्हाई द नेम इज डीप वेटलैंड, ठीक है। और जब आपने फॉरेस्ट बनाया, आपने उसको एरिया को रिस्टोर किया और आपको मालूम है दैट यू आर वर्किंग ऑन अ फ्लड प्लेन एरिया, तब आपको बीच में वाटर बॉडी अगर आप रखोगे सो इट विल अट्रैक्ट यू नो डिफरेंट, मतलब वो वाटर बर्ड्स को भी लेकर आएगा, और जो एनिमल्स यहाँ पे मूव करेंगे उनके उनके पीने के लिए भी पानी होना चाहिए। ओके, सो इनिशियली इसमें काफी कुछ काम करना पड़ा। यहाँ पे शोर लाइन वेजिटेशन जो आप देख रहे हो, ये प्लांट्स लगाए गए, पानी के अंदर भी प्लांट्स लगाए गए, और सबमर्ज्ड, जिसको हम सबमर्ज्ड वेजिटेशन बोलते हैं, और फ्लोटिंग वेजिटेशन भी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। अब तीनों तरह की वेजिटेशन का एक अलग रोल था। जो आपके ये साइड वाले जो वेजिटेशन है, ये वाली, अब ये ग्रासेस बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो इनके अंदर जो छोटी बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाकर रहती हैं, उनको फूड मिलता है, उनके ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स खा के ग्रासेस के। जो आपने सबमर्ज वेजिटेशन डाली, वो जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनका खाना बनेगा, वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगी। और जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है, जो पानी के ऊपर तैरेगा, जैसे आपका, वो प्लांट्स क्या करेंगे, वो आपके इंसेक्ट्स को, जैसे आपके ड्रैगन फ्लाइज हैं, डेमसल फ्लाइज हैं, ठीक है, उनको बैठने के लिए, उनकी एग लेइंग के लिए वो सरफेस जो है वो हेल्प करेगा। सो जब 2005 में 4 में ये रेडी हुआ, आप देखो 5 में हमारा फर्स्ट जो लॉट था माइग्रेटरी बर्ड्स का, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाउ इनिशियली जो थी इसमें फिशेज नहीं थी, तो आपको फूड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और समझाऊंगी। आपने अभी इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज पढ़ी होंगी, है ना। जब हम किसी भी जगह को रिस्टोर करते हैं तो उसमें एक्स सीटू या इन सीटू आपने पढ़ा होगा। सो व्हाट इज इन सीटू नाउ? इन सीटू होगा जब आप वहीं के एरिया को, वहीं की स्पीशीज को आप रिस्टोर करेंगे, एंड एक्स सीटू मीन्स जब आप बाहर से कोई एनिमल या कोई स्पीशीज या ट्री ला रहे हैं और आप एक जगह को कंजर्व या रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे हमने जू बनाए, है ना, हमने नेशनल जूलॉजिकल पार्क बनाए, हम बाहर से एनिमल्स को लाए, और सिटी पार्क्स हैं, इनमें भी यही अप्रोच चली। अर्लियर इट वाज एक्स सीटू। अब हमारे पास फिशेज नहीं थी, तो हमने यमुना की फिशेज ढूंढी कि हम कौन कौन सी फिशेज जो है अपने वेटलैंड्स में रख सकते हैं। तो यमुना में क्या मिलती हैं, हमने वही इसमें रखी वेटलैंड में, ठीक है। तो कुछ ट्री स्पीशीज हम बाहर से लेकर आए क्योंकि यहाँ पर नहीं थी, बट नाउ अब जो इसकी अप्रोच है, इट इज इन सीटू नाउ। अब हम बाहर से कुछ नहीं लाते, अब यहीं के जो प्लांट्स हैं उन्हीं के सीड्स कलेक्ट करके फिर और प्लांट्स को लगाया जाता है, ठीक है। फिशेज भी आपस में ब्रीड करते हैं, बर्ड्स भी अपने आप बाहर से आए, बट अब यही एग लेइंग करते हैं, यही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो ये दो स्ट्रैटेजीज आपको पार्क को समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ these fishes they become food for different birds, बहुत जो भी आपके माइग्रेटरी थे और जो डिफरेंट रेजिडेंट बर्ड्स थे, ओके। सो उसके बाद डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स दे स्टार्टेड कमिंग इन दिस एरिया। और अभी भी आप जब यहाँ पे आओगे तो हर विंटर में आपको अक्टूबर के बाद ये डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं ये माइग्रेट करके आना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। अभी मैंने एक स्लाइड आगे कराया, अब आप इसमें देखोगे। सो इसमें बहुत सारे डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जैसे दिस इज नॉर्दर्न पिनटेल, ठीक है, देन दिस इज नॉर्दर्न शॉवलर डक, और इसी तरह आपको कॉमन कूट दिखेगी, अलग अलग डक्स आपको दिखेंगी। इस टाइम पे बहुत सारे थाउजेंड्स के नंबर में माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो इस टाइम वेटलैंड्स में है, ठीक है। दिस इज रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल डक विद अ बिग हेड, रेड ऑरेंज कलर हेड, और ये इस टाइम दिल्ली में कहीं नहीं है, आपको सिर्फ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क फेज 2 में दिख रही है, ठीक है। ऑल्दो द नंबर इज लेस दिस टाइम, क्योंकि इस बारी अनइवन रेनफॉल आपने देखा, अक्टूबर में बहुत बारिश हुई, सितंबर एंड में, जिस वजह से वेटलैंड्स में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और जहां से ये माइग्रेट करके आते हैं, जो इनका रूट है, ये दे कम फ्रॉम, मतलब दे हैव डिफरेंट रूट्स। सो जैसे कई बार ये राजस्थान का रूट लेकर वेस्ट साइड से आते हैं, तो राजस्थान में बहुत सारे वेटलैंड्स ऑलरेडी भर गए क्योंकि बारिश जो भी आई, फिर हरियाणा में भर गए, तो दिल्ली तक आते आते नंबर थोड़ा कम है,
ठीक है. But if you are interested in birds, so you can find out a lot of diversity this time. So this is great cormorant. This bird come from China, and it also come from some parts of Leh and Ladakh, क्योंकि वहां तक जाते जाते भी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है बहुत. सो ये अक्टूबर में आना शुरू हो जाते हैं. दे स्टे हेयर फॉर द होल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये बहुत अच्छे नंबर पे आपको दिखेंगे, जब जो है ठंड बिल्कुल पीक पे आ जाती है. ठीक है. और फरवरी तक भी दिखेंगे. मार्च में थोड़ा कम हो जाते हैं. ठीक है. जैसे जैसे जो है वार्म और होगा टेम्परेचर, तो ये वापस अपने नेटिव प्लेस पे चले जाएंगे. राइट. इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर आपको बहुत सारे अदर बर्ड्स भी दिखेंगे. जैसे आपको पॉन्ड हेरॉन दिखेगा. यू विल सी दिस ओरिएंटल डार्टर. ठीक है. और ये ओरिएंटल डार्टर जो है, इसकी नेक जो देखो बिल्कुल कर्व एकदम बहुत लंबी इसकी नेक है. एंड इसको स्नेक बर्ड भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द नेक. राइट. और ये बहुत जगह पे वेटलैंड्स कम होने की वजह से, हैबिटेट लॉस होने की वजह से ये बहुत ही कम दिखता है. सो इट इज नियर टू थ्रेटेंड स्पीशीज, राइट, अकॉर्डिंग टू IUCN. ठीक है. बट यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में यू विल फाइंड द ब्रीडिंग पॉपुलेशन. आप कभी मई जून में अगर आओगे तो आपको दिखेगा नेस्ट बनाता हुआ. आपको इसके यंग चिक्स भी दिख जाएंगे. ठीक है. अगर आप बहुत केयरफुली बिना डिस्टर्बेंस के अगर आप उस जगह पर जाकर देखो. ठीक है. सो दिस इज पॉन्ड हेरॉन. दिस इज व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर. अच्छा, एक और वेटलैंड जो है फेज 1 में ही कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है. वी हैव 2 wetlands in यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क फेज 1. सो दिस इज नैरो शैलो वेटलैंड. आप देखोगे ये इसकी चौड़ाई कम है, इसकी डेप्थ भी कम है. और इसको बनाने का भी एक पर्पस था, क्योंकि रिवर यमुना जब बहुत हेल्दी कंडीशन में थी, उसके फॉरेस्ट बहुत अच्छे थे, उसके आसपास बहुत अच्छी फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, तो तब वहाँ बहुत तरह के बर्ड्स और अदर जो हैं मैमल्स और रेप्टाइल्स सब दिखते थे. बट जैसे जैसे हमने फ्लड प्लेन को खराब किया, उसके फॉरेस्ट काटे और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करी, तो वो सब बर्ड्स, रेप्टाइल्स और जितने भी मैमल्स थे वो यहाँ से मूव आउट हो गए. क्योंकि हैबिटेट लॉस होगा तो ऑफ कोर्स वो एनिमल वहाँ से जगह छोड़कर जाएगा. ठीक है. So this wetland was created in keeping in mind that it will give a look of river Yamuna. आप देखो ये बिल्कुल ऐसे टर्न्स लेके रिवर की तरह. दिस इज 1.8 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है. और उसके बाद इसके दोनों तरफ पे हमने जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज बनाई हैं वो इस तरह से हैं कि ये बिल्कुल एक आइडियल होम है बहुत सारे बर्ड्स को मतलब एक हैबिटेट प्रोवाइड करने का. तो जब ये वेटलैंड बना उसके बाद के आप रिजल्ट्स देखोगे, so you will find a large heronry of this black crowned night heron. Now this bird is very popular in, I mean it was very popular in Delhi. और पूरे यमुना रिवर, जहाँ जहाँ रिवर यमुना के फॉरेस्ट थे वहाँ इसकी हेरनरी बनती थी. बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स व्हेन द होल फॉरेस्ट और दैट फ्लड प्लेन वाज डिग्रेडेड, सो दिस बर्ड वाज आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम दिल्ली. ठीक है. और बट अब आप देखोगे जब से वो फॉरेस्ट कम्युनिटी पूरी बनी और एक अच्छा हैबिटेट एस्टेब्लिश हुआ. ठीक है. उसके जिस तरह के उनको ट्रीज चाहिए, और इनको बहुत हाइट वाले ट्री नहीं चाहिए, और ये जो ट्रीज हैं ये पानी के पास लगे होने चाहिए ताकि इनको फिशेज, छोटी छोटी फिशेज ये लेकर अपने चिक्स को खिला सके. Right. So now when you come in the month of May and June, you will find that more than 1,000-1,500 nests at a time you can easily spot. This is a very beautiful bird, black crowned night heron. Right. Next, I have changed my slide. Yeah. And this is a very beautiful snake. You can see this is sea boldy snake or smooth skin snake. अब आप इसको देखो ध्यान से तो थोड़ा इसका शाइनी टेक्सचर भी है. एंड दिस वाज लास्ट सीन इन दिल्ली इन 1942. नाउ यू कैन सी दैट उसके बाद ये क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस था. इसको भी वेटलैंड और थोड़ा सा मार्शेस जैसा जो है एरिया चाहिए रहने के लिए, बट दैट वाज ऑल डिग्रेडेड स्पेशली इन दिल्ली. सो दिल्ली में जो है ये लास्ट दिखा था 1942 में एज पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट. But after 60 years, now you can see it again in Yamuna Biodiversity Park. So these are the big achievements which the park has achieved in these 18 or 20 years.
Okay, so this is this is dragonfly and this is damselfly. इनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जब हम वेटलैंड हमने बनाए तो उसमें हमने कुछ फ्लोटिंग वेजिटेशन रखी, जैसे वाटर लिली हुआ, लोटस हुआ, और भी फ्लोटिंग वेजिटेशन वाले प्लांट्स, ठीक है। और जैसे टाइफा जो है वो ग्रास है, टाइफा की जो यंग ग्रास के जो शूट्स निकलते हैं उस पे ये अपने एग लेइंग करती है। नाउ व्हाट इज, हम सब ने ये इंसेक्ट देखा है बट वेरी फ्यू ऑफ अस नो अबाउट दिस, कि इसका जो लार्वा है, जो इसका एग से जो लार्वा वाला इसका स्टेज है, निम्फ वाला, वो एग जो है वो मस्कीटो के जो लार्वा है उनको खा लेता है, और ये जो अडल्ट ड्रैगन फ्लाई है ये अडल्ट मस्कीटो पे फीड करती है। तो उससे क्या होगा, आपकी मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस कम होंगी। नाउ एवरी ईयर यू विल सी दिल्ली सफर्स अ लॉट। इन फैक्ट आई वाज रीडिंग फ्यू डेज अगो दैट विंटर में भी डेंगू और मलेरिया के केसेस निकल रहे हैं, डेंगू के, विच इज अगेन अ वेरी शॉकिंग, कि इतना कि उन्होंने अपने आप को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो गर्मी में तो मिलेंगी आपको बट इतनी मतलब एक्सट्रीम ठंड में भी दे आर एबल टू सर्वाइव, राइट। और अभी भी आप देखो तो आपको डेंगू के केसेस दिल्ली से रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी सैड टू सी दैट उनका कोई प्रेडेटर नहीं है क्या जो उनको खाए, जो उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। एंड एवरी ईयर लॉट ऑफ पीपल दे लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ मस्कीटो बाइट, विच इज अगेन अ वेरी शॉकिंग, राइट। So one of the reason is that we have lost our wetlands, और जो भी हमारी wetlands में जो ऐसे insects आते थे जो उनके population को control कर सके वो अब नहीं दिख रहे आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मस्कीटो की population बढ़ती जाएगी, उसको जहाँ पे भी पानी का source मिलेगा, either it is your flower pot और कहीं पे भी जो साफ पानी, उसको एक puddle भी दिख जाता है तो वहाँ पे वो egg laying करता है, right। So जब आप पार्क में आओगे, so when you will stand near the water body you will never get a mosquito bite. The reason is that कि वहाँ पे dragon flies हैं which are actually eating away the mosquitoes and controlling their population, right। Now the next move is towards our deep forest area or the reserve forest area. अब आपको slide से ही समझ में आ रहा है that it is more green, it is more dense, and everywhere you will find small plants and big plants, okay। Now अब आप याद करो जो फयाज सर अभी जब सुबह आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब इंटरेक्शन हुआ, सर ने बताया कि वी नीड डिफरेंट लेयर्ड फॉरेस्ट, हाँ, और यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर्स में आपको जो है प्लांट्स दिखेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज प्लांट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव देयर इम्पोर्टेंस। अब आप देखो ग्राउंड पे आपको वेजिटेशन दिख रहा है, यू आर एबल टू सी वेजिटेशन in the middle also, and some top canopies also in the form of trees. Now what is the role of this type of layered vegetation? When we move on the road, हम देखते हैं रोड पे या तो बहुत लंबे बड़े ट्रीज होंगे या कुछ एक जैसे हाइट के होंगे, ग्राउंड पे हम कुछ रखते ही नहीं। तो उससे क्या होता है, जब आपका कोई व्हीकल मूव कर रहा है, एंड वी नो दैट दिल्ली इज हैविंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन लोड, है ना, पोल्यूशन PM 2.5, PM 10, PM 1 भी अब तो, so they are very small, very tiny particles, and when a strong air blows, और जब हम चलते भी हैं normally तो वो बहुत लाइट पार्टिकल है तो वो ऊपर की तरफ रेज करेगा। एंड व्हेन वी आर नॉट हैविंग डिफरेंट layers in between, layers in the sense layers of different vegetation, so what will happen, they will settle on any one of the layer and rest of all is inhaled by us, या तो हमारे ऊपर सेटल होगा, है ना, और जो भी बिल्डिंग्स, जो भी स्ट्रक्चर जहाँ हम खड़े होंगे, या हमने इनहेल किया उस एयर को तो हमारे अंदर जाएगा। So that's why you will see Delhi people are always coughing और breathing disorders बहुत हैं उनमें उनको, ठीक है। और आप देखो आपके प्लांट्स पे कितना डस्ट आ जाता है शाम तक, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा लेयर्ड कुछ कवर नहीं है जो उसको कवर कर सके। So especially in this area when you will move, you will find that the pollution load is very less because you have different layered forest in between, और जितना भी डस्ट है वो प्लांट्स अपने ऊपर सेटल करते हैं। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड द टेम्परेचर इज अगेन very less as compared to the outside. We have installed different different machines to calculate the AQI and different temperatures, and comparatively to outer main road area, this area is quite cold, and it provides a lot of ecosystem services to the people, ठीक है, a lot of oxygen is generated, and
there was a very popular article. I don't remember the name of the newspaper. It was either Times of India or Hindustan Times few days ago, where there was a research by some scientists from the southern parts of the India, and they have calculated the cost of the one people tree. Okay, so the annual benefits that we are getting, it was in crores from one single tree in terms of oxygen, if we say. अभी आपने पीछे शायद एक और भी बहुत पॉपुलर ये न्यूज हुआ था कि 400 रुपीज में वो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आपको प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं. नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट ओनली फॉर 15 मिनट्स वी आर पेइंग 400 रुपीज. अब आप देख लो, आप तो हर सेकेंड आप सांस ले रहे हो, है ना, वी ऑल आर टेकिंग. तो हम कितने पैसे खर्च कर दें अगर हमें ऑक्सीजन ये प्लांट्स ना दें. सो यू कैन सी देयर आर thousands of trees which are planted over here, and in past 20 years how much oxygen they have given, how much carbon they have taken inside, right? So now अब जब कार्बन की बात कर रहे हैं, so leaf litter plays a very important role here. आप देखो जितनी भी जो ग्रीन लीव्स थी, उन्होंने कार्बन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और फोटोसिंथेसिस किया, और ड्राई लीव्स, डेड लीव्स जो है आपकी फॉल हो गई. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज यू विल फाइंड इन डिफरेंट पार्क्स में वो इसको कलेक्ट करके या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं, which again creates a lot of pollution, and all that carbon which was fixed by the plant, it is again going into the air. But here you will find that a lot of leaf litter deposition is here, and इस पे अब क्या होगा, बहुत सारे microbes आएंगे, वो इसको break down करेंगे, and then that carbon was again released back into the soil instead of going into the air. So this is how these trees they fix carbon from the air and release it back into the soil. Also is leaf litter mein na, you will also find a lot of insects and snakes. They are doing hibernation, और उनकी अलग ही अंदर एक फूड चेन पूरी चल रही है. जब इंसेक्ट्स वहां पे होंगे तो बर्ड्स उनको खाने आएंगी, फिर उन बर्ड्स को खाने के लिए एक बड़ा बर्ड आपको यहाँ दिखेगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ड्राई लीफ litter, and you will find some of the very interesting food cycles inside. अब आपको देखो दिख रहे हैं वो रेड एफिड्स हैं, वो किसी डेड इंसेक्ट पे या किसी डेड लीफ पर आए हैं, फिर उनको खाने के लिए कोई ग्रास हॉपर या कोई इंसेक्ट आएगा, देन गार्डन लिजर्ड, देन सम बर्ड्स विल बी देयर for eating this lizard. So like this, a lot of small activities you will see when you will move in around the park. और अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो डंग बीटल है. I don't know how much it is clear to you. और उसमें 2 beetles आपको दिख रहे हैं which are taking away the excreta of some animal, और उससे वो न्यूट्रिएंट लेके उसको सॉइल में वापस रिलीज कर देंगे. ठीक है, सो ग्राउंड कवर को क्लीन करने में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनका रोल आपको दिखेगा अभी. सिमिलरली you will also find I have just changed the slide, I hope it comes on the screen quickly. So similarly you will also find small insects like this is let it change just a second. I have just changed the slide and it is showing an insect over here which is bagworm, and very interestingly this bagworm makes its covering by breaking some of the twigs from the young plants, and yeah, this is, and it makes a covering for itself, for its protection. ठीक है, ये एक्चुअली वीडियो है, मैं इसको प्ले नहीं कर रही बिकॉज वो बहुत ही स्लो उसमें चल रहेगी. सो फ्रॉम द पिक्चर यू कैन सी, so ground पे भी you will find a lot of insects are there, and it is eating away small insects and young blades of the grasses, and so even the tiny creature is contributing a lot, and these tiny creatures, they become very important part in food chain. And also you will find a lot of reptiles in the park, right? And right now we are having 11 different species of snakes in the park, which includes 3 species of venomous snakes, and rest others are non-venomous. So this is a picture of rat snake, or rat snake is very popularly seen in many agricultural fields, and snakes are actually seen as farmers friends because ये बहुत सारे rats और rodents को खा लेते हैं, prefer करते हैं खाना.
और ये क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाते हैं। सो यहाँ पे भी जैसे नियर बाय पहले एग्रीकल्चरल फील्ड्स हुआ करती थी, तो जो है लोग पहले क्या करते थे, देखो नियर बाय वो या तो इनको मार देते थे, ठीक है, और बहुत बहुत ही क्रुएलिटी से। अब उन जो आसपास के लोग हैं, देखो उनमें भी एक अवेयरनेस आई, उनको मालूम है कि अगर कोई स्नेक या कोई ऐसा रेप्टाइल हमें दिख रहा है या कोई भी इंजर्ड एनिमल या बर्ड कुछ भी, तो वो उनको बस एक कॉल करना है पार्क में, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ अराउंड वन मंथ अगो, देयर वाज अ स्नेक सीन इन द नियरेस्ट कॉलोनी ऑफ द पार्क, ठीक है। तो वहां से कॉल आया कि यहाँ पे स्नेक है, विच वॉज सीन लेट इन द इवनिंग, 6 बजे के आसपास। और जब हमारी टीम जब तक वहां गई तो वो स्नेक नहीं दिखा, है ना। स्नेक को क्या पता कि मुझे यहीं बैठना है, तो स्नेक कहीं घुस गया किसी घर में। अब वो जिस घर में गया शायद उस घर के सब लोग बाहर आ गए, और वो पूरी रात बाहर बैठे रहे, उनके पड़ोसी भी बाहर बैठे रहे, ठीक है। और मतलब जस्ट टू सेव दैट, ठीक है। अगर वो पीपल, अगर वो दैट ग्रुप ऑफ पीपल अगर वो चाहते तो वो उसको शायद मार भी सकते थे, ठीक है। कि और उन्होंने बताया कि वो सांप कोबरा है, ठीक है। अब था या नहीं वो टीम को नहीं पता चला, क्योंकि वो नहीं देख पाई। तो वो 2-3 आवर्स तक टीम बैठी रही, और उन लोगों ने कि हमारी टीम को इजी हो जाए उस घर के अंदर अप्रोच करना, उन्होंने अपनी कुछ दीवारें भी तुड़वा दी, अपने सीवर का वो जो था वो एरिया वो भी तुड़वा दिया कि शायद वो सीवर वाले टैंक में गया है, और बट वो स्नेक नहीं मिला। फिर सुबह में फिर कॉल आया कि वो स्नेक आ गया घर से बाहर और बाहर बैठा है, एंड दैट वाज अ कोबरा, राइट। और वो सोचो पूरा विंटर में दिसंबर के मंथ में वो पूरी फैमिली और उनके पड़ोसी भी बाहर बैठे हैं, उनके लिए खाना भी बाहर आ गया, जस्ट टू सेव वन लाइफ। और फिर मॉर्निंग में कॉल आया कि स्नेक इज सिटिंग आउटसाइड। हो सकता है जब धूप आ गई होगी तो स्नेक भी सन बास्किंग के लिए, क्योंकि दे ऑल डू हाइबरनेशन, है ना। वो विंटर में किसी तरह बाहर आ गया तो उसको भी डिफिकल्टी हो रही है, उसको तो छिपना है, वो तो 2-3 महीने की लॉन्ग स्लीप में जाएगा। सो देन आवर टीम वेंट देयर, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, एंड स्नेक वाज वेरी हेल्दी, उसको फिर पार्क में आके रिलीज किया। एंड वी अप्रिशिएटेड दैट, यू नो दैट मतलब दोज ग्रुप ऑफ पीपल के यू सेव दैट लाइफ, क्योंकि उनको समझ में आया कि इसको मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है कि हम उसको सेव कर सकते हैं तो वी विल वेट, ठीक है। सो आई मीन दैट इंसिडेंट दैट टच्ड everyone's heart, in especially in the park, that yes, people are getting sensitive towards different creatures. So in park also, in the month of monsoon, और जब ज्यादा गर्मी होती है तब आपको कभी ये creatures दिख जाएंगे बाहर, और मतलब वो ठंडी जगह पर बैठना आके प्रेफर करते हैं, या बारिश में वो माउंट्स पे चढ़ जाते हैं थोड़े से हाईली एलिवेटेड एरिया में, ठीक है। अभी इन दिनों पार्क में एक एरिया है, एक मतलब वेटलैंड तक जाने का एक हमने पुल सा बना रखा है। आप कभी आओगे तो आप श्योरली वी विल विजिट दैट साइड। तो हम उसको सीमेंट ब्रिज बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा कंक्रीट वहाँ पे लगा के एक रेज्ड लैंड है, सो दैट वी कैन सी वेटलैंड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो वो अभी जब से अब थोड़ी धूप निकलने लगी है तो वहाँ पे एक मॉनिटर लिजर्ड, ठीक है, वो पूरा आके बैठती है वहाँ पर, और सन बास्किंग करती है, धूप लेती है, फिर शाम होते ही अंदर चली जाती है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे नीड, किस तरह का उनको गर्मी में वेजिटेशन चाहिए छिपने के लिए या बाहर निकलने के लिए, और दे फील सेफ, दैट इज व्हाई दे कम, राइट। And next you will find that a lot of herbivores now they are very active in the park, because grasslands are there and उनके खाने के लिए बहुत सारी grasses हैं, so you will find a lot of Indian hare are here, ठीक है, in the park. And also you will find these days especially you will find a lot of small birds, they are silver bill munias, they are eating the grains from the grasses, so they are very active these days. This is scaly breasted munia, और विंटर में हम लोग बर्ड काउंट भी करेंगे, होपफुली नेक्स्ट मंथ होगा। सो इफ थिंग्स आर वेल, so we will send the invitation to your college also, those students who are interested, and they can walk with us up to few kilometers and count the number of birds, so they can come. So this is how you will find, this is red ava david, red munia भी बोलते हैं इसको, this is male and this is female, right? So उनको कैसे identify करना है, उनका क्या habitat है, वो कैसी उनकी sound होगी, so you will learn different things. And this is tricolored munia eating the seeds from the phragmites grass. Then you will find a lot of other pollinators on the flowers. So pollinators क्यों जरूरी है? Pollinators जो है
they will transfer the pollen grains of flowers from one flower to another, and then fruit formation will take place, right? And they also become a very important part in food chain. So you will find different tiger moths and small honeybees, and different beetles and different other insects and butterflies. And this is praying mantis. Okay, and this is again also a video, but I'm not playing it because I know that this will take a lot of time to play. So in this praying mantis is again a very interesting insect. It feeds on the insect also. और ये छोटी छोटी चींटियां और छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा लेता है, और ये अपनी नेक को पूरा जो है बहुत अच्छे से अप टू 220 डिग्रीज तक उसको पूरा रोटेट कर लेगा ये पूरा, राइट? और so you similarly you will find a lot of other creatures. So this is again a grasshopper, and it is eating the grains from the grasses. अभी आप पीछे अगर न्यूज़ आपने सुनी हो तो लोकस्ट का बहुत जो है चर्चा में आया था कि बहुत बड़ा स्वैम्प ऑफ लोकस्ट आया और उसने पूरा वेजिटेशन खत्म कर दिया, ठीक है? सो पार्क में भी आपको बहुत सारे ग्रास हॉपर्स दिखेंगे, स्पेशली पोस्ट मॉनसून टाइम में. बट फॉर ईटिंग देम वी हैव डिफरेंट प्रेडेटर्स. अब इनको खाने के लिए गार्डन लिजर्ड्स हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं, सो दे बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फूड चेन एज वेल. सो यहाँ पे बहुत ही बैलेंस्ड वे से जो है आपको दिखेगा. इसके अलावा आपको और बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे जो फ्रूट्स जब आपको ट्रीज पे मिलेंगे तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसे बुलबुल है, दिस इज एशियन कोयल, दिस इज कॉपर स्मिथ बार्बेट. एंड अच्छा ये बताओ, ये अभी बहुत ही रिसेंटली हम सब ने देखा, अगर आपने अभी 26 जनवरी पे अगर आपने परेड ध्यान से देखी होगी तो ये बर्ड जो था ये एक स्टेट के टैबलेट दिखा था झांकी में. Now anyone of you can tell me that Ma'am, was it on the tableau of Maharashtra? yeah. So this is the state bird of Maharashtra. इसको हम yellow footed green pigeon बोलते हैं. And I was very pleased to see this bird क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बताते थे इसको ना पार्क में कि येलो फुटेड ग्रीन पिजन है. ये समर्स में बहुत ज्यादा दिखता है, सॉरी विंटर में बहुत क्लियरली आपको दिखेगा. समर में भी दिखेगा बट विंटर में अच्छा जैसे ट्री पे लीव्स थोड़ी कम होती हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आपको नजर आता है, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, अदरवाइज ये कैमोफ्लेज होता है, ठीक है? सो दिस बर्ड वाज देयर एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द पिजन दैट you see in your locality, that blue gray pigeon that is actually invasive species, or this is different. So this is yellow footed green pigeon. Then again you will find a very interesting bird. This is copper smith barbet, and this is a small bird with different colors. This also looks very beautiful. और अभी February March में ये बहुत एक्टिव होगा क्योंकि ये अपने समर में इसको नेस्टिंग पूरा करना है और मॉनसून आने से पहले इसको एक ऐसा ट्री ढूंढना है जो हॉलो हो, डेड हो और जिसके अंदर ये अपना नेस्ट बना सके, ठीक है? उसको छेद करके पूरा एक सर्कल बना के उसके अंदर एक टनल जैसी बनाएगा. सो ये देखो अपनी बीक से ही ये जो है उसमें होल कर करके और ये उस पर हिट करेगा और ये ठक 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 की आपको आवाज लगातार 1 महीना 2 महीना तक आएगी जब तक वो नेस्ट नहीं बनता, ठीक है? सो वो साउंड इतनी प्रोमिनेंट होती है कि आपको बहुत दूर तक वो साउंड आ जाएगी, ठीक है? और दैट इज व्हाई द नेम इज कॉपर स्मिथ बार्बेट. So this is very interesting act which this bird do, and ये आप सुनना ये अर्बन एरियाज में जितने भी हमारे पार्क्स वगैरह हैं वहां पर भी ये बहुत कॉमनली साउंड आपको सुनाई देगी. This is purple sunbird. Now through this slide you will be able to see that what are the different needs of the birds while choosing nest for them or nesting material for them. So it's totally different for every bird. Like this is purple sunbird और इसका it is entirely different situation कि वो उसको hang करके और अपने young ones के को जो है खाना देना है तो उसने कैसा hanging वाला एक nest बनाया with all that material which was available, ठीक है? और वहीं आप देखो स्पॉटेड आउलेट है जिसने एक बहुत स्मॉल एक होल में जो है बना ट्री में रहकर उसने अपना बनाया है. सो नाउ यू सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और how they play a very important role in creating the nest and for giving them the nesting material. So
this park has a lot of interesting, things to see like this. Yeah. Now there is a picture of wild boar. I just want to see. It will take few seconds to come. Yeah, so park is also having a lot of big mammals which are very active during the night. So one of them is wild boar. ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पर होगी ये शेयर. So wild boars are actually the wild pigs, and they are omnivores. They feed on grasses and small plants also, and they also feed on small rats and small mammals as well. So this is wild boar. मैं एक बार वीडियो प्ले करती हूँ, अगर आपको थोड़ा और इसकी मूवमेंट से समझ में आए कौन सा एनिमल है. ठीक है, ये दिन में भी वैसे दिख जाते हैं, बट नाइट में दे आर वेरी एक्टिव. हाँ, ये वीडियो प्रॉब्लम करेगी. सो आई एम स्विचिंग द नेक्स्ट स्लाइड. इसके अलावा you will also find a lot of nilgais or blue bulls in the park, and nilgai is actually not a guy. It don't belong to the cow family. It is the largest antelope, और वो इंडिया में ही सिर्फ मिलती है, तो it is endemic to India. और बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स के आसपास आपको नीलगाय दिखेगी, एंड बहुत बारी आप देखोगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स में वो मारी भी जाती है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में वो मतलब उसमें उसके लिए भी उसको बहुत वो कर रखा है. ओके, बट without knowing this, that actually we have entered to their territories, and we have not left any space for them to live. That is why these instances they occur. But in our park you will find a good population of wild pigs and nilgais, and we have not seen any of the case that they are entering into anybody's field, because in park itself they are getting a lot of food in the form of grasses and different leaves, and different types of things they are eating. Fruits are here. So so one should leave some spaces for these creatures also, so that they can live. I don't know what has happened to this video. It is not moving. You have to wait for another 1 or 2 minutes, and just I hope it will come now. Yes, So I ma'am. was Yes, ma'am. showing the slides of mammals which are seen in Yamuna Biodiversity Park. So this is blue bull.
Nilgai, and a good population of Nilgai you will find in the park. This is the male blue bull, and the female is slightly dull in color. Let it come on the screen in the full screen mode. अच्छा, आपको इसे स्क्रीन पर अगर छोटा भी दिख रहा है ना, सो नील गाय का ये 49 नंबर वाला स्लाइड है, ठीक है। एंड द 50th वन इज द सिवेट। ओके, सिवेट्स जो है ये भी स्मॉल मैमल्स हैं, एंड सिवेट्स जो है ये भी नॉक्टर्नल है। नाइट में दे आर वेरी एक्टिव। It's not connected properly. Yeah, so this is civet, right? And this is also nocturnal. Then we have jungle cats. Abhi screen, हाँ. So jungle cats are, I mean, bigger in size than the normal cats, and they are very good predators. They're also seen in the night, right? And next slide is of a leopard, which which came to the Yamuna Biodiversity Park in the year 2016, right? And this leopard was a 3-year-old leopard, male leopard it was. And as per our investigations, I mean, this leopard has moved from Kalesar Wildlife Sanctuary, Haryana, and used River Yamuna as a corridor, and then reached to Yamuna Biodiversity Park phase 2. Then from the corridor, it reached to phase 1 and stayed here for another 20 more than 20 days, right? And the leopard was actually willing to stay for a long time, but the people and the government authorities were not, especially the forest department and all. And as the human habitations are very closely surrounding the park, so this leopard was in was in search of a territory. And after 2-3 years, these carnivores, I mean, they get separated from their parents, and they are forced to go and make their own territories. So उसी तरह से this leopard was in search of a territory. So इसकी रात भर पूरी monitoring होती थी. Our teams were very dedicatedly they were working for capturing all the moments of this leopard. Again, the network issue has occurred, I guess, and I have to share it again. Yeah. Okay, so it was a 3-year-old male leopard. Yeah. So the next module which we will be visiting now is the medicinal herbal garden, and this area is also very beautifully created, and it has all the medicinal most of the medicinal plants from the Yamuna floodplain area. So I'll be sharing the pictures of few plants with you. Like, this is Vajradanti plant, and basically the Vajradanti is added in the toothpaste, and many toothpaste, they say that they add Vajradanti, and this helps in constructing good gums and prevent the toothache and all. So these are the leaves which give the extract to that toothpaste. Next plant which we are having, which we are conserving, is the Plantago major, or it is known as isabgol plant. अभी आपकी screen पर आएगा ये. And basically the husk of the seed is used in different digestion problems, and it is easily
available in the market also, the husk of the seed. No, why it is not coming? Actually, I have inserted few videos in between ना, और जहाँ जहाँ वो वीडियो आती है वहाँ पे बहुत टाइम लेता है. It is not coming properly. Okay, so meanwhile, जब तक ये चलेगा, we'll discuss few more plants. Okay, so all these herbal plants, they are introduced for the information only, and they're not selling anything, to the market or to the people. And this is for the information and for the research purpose. A lot of young students like you and other scholars, they come and they see how these plants are grown here and what are their different benefits and what are the different conditions they need and how we can grow these plants here. Right, so different plants you will see when you will come to the park, and you will also find a small small pond, water lily pond inside the medicinal herbal garden. So this is the picture now coming on your screen is a gold plant. Okay. And इसकी हाइट वगैरह इतनी ही रहेगी प्लांट की, बस इसका जो सीड आता है, ठीक है, उसका जो बाहर का जो कवरिंग होती है, जो हस्क होता है, इट इज बेसिकली यूज्ड. And yeah, so I was telling you that we also have a small water lily pond inside, right? And that pond is having a lot of medicinal plants in the form of different I think you have to share that. Yeah, so this is the picture of that pond, and it is having a lot of submerged vegetation in it, and you can see a small turtle is taking a dive into the water. So it is full of life, this small pond. Next we will be covering our butterfly conservatory, and you will find that a lot of butterflies are here in the park, especially in the springtime and in the September or October month, and we count the number of butterflies also. I remember in last October, there was a 5 days program where some students of different colleges, they also participated, and we counted different butterflies which are seen in Yamuna Biodiversity Park. And for butterflies, we need to understand that they are dependent on plants for two big reasons: one for the nectar and one for one for egg laying. So in this picture, you can see there are different caterpillars. There are two different types of caterpillars you can see. The above one, this one is, these are the caterpillars of small salmonella butterfly. Okay, and this is a caterpillar of plain tiger butterfly. So they both are feeding on different plants. So butterflies के लिए जरूरी है कि उनके जिससे वो रस लेके वो प्लांट भी हो और जिसपे वो एग लेइंग करेंगे. सो ये बहुत ही सिस्टमैटिकली वेल प्लान्ड एक्टिविटी है. देखो अब ये लाइफ साइकिल दिखा रखी है. वैसे तो हमने पिक्चर्स में बहुत बार देखी है बुक्स में, बट यहाँ पे आप लाइव देखोगे इसको तो बहुत सारी बटरफ्लाईज के जो है आपको एग दिखेंगे, फिर उनका प्यूपा स्टेज दिखेगा. ठीक है, फिर वो प्यूपा कैसे कैटरपिलर जो है कैसे प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्यूपा. और कैसे वो प्यूपा से कुछ दिन रहने के बाद वो बटरफ्लाई इमर्ज होगी. सो वी रिकॉर्ड एवरीथिंग. अगर हमें मालूम है कि इस पेड़ पे बटरफ्लाई ने एग दिए हैं, सो डेली वी आर गोइंग देयर, वी आर capturing the photographs, and we are taking a record, and we are taking photographs also that how it is changing, so that we can show it to to public, or we can print it somewhere so that it can reach out to many people. So this is how you will see different butterflies in the park and how they are camouflaging. And now butterflies are very important. Why? Because so first of all, they are very good pollinators, है ना. वो जब रस लेती है तो वो pollens को transfer करती है. Also they are the indicator of a healthy ecosystem. ठीक है, अगर आपका अगर इकोसिस्टम या आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है या बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, तो वो इंडिकेट करेंगे कि वो वहां नहीं दिखेंगी आपको. ठीक है, so you will find different butterflies in देखो कैसे वो food बनती है different organisms का. Like this is caterpillar eaten by butterfly. Then spiders also, they feed on butterfly, and praying mantis also. And how
these birds, they directly eat the butterfly, right? So from small caterpillar to a butterfly, how they become an important part in food chain. So, and that bird is then eaten by a big bird. This is shikra, this is raptor. Okay, so you can see how energy is flowing and why those plants are important. फिर उसके ऊपर आने वाले insects कितने जरूरी है, फिर insects को छोटे birds खा रहे हैं, छोटे birds को बड़ा bird खा रहा है. ठीक है, so this is how the energy is flowing. So you will find in this park, you will find a lot of such things. I mean, वो practical जो आप theory पढ़कर आ रहे हो, practical बिल्कुल यहाँ पर है. And we're also having students आते हैं जब फील्ड से लौट कर, तो बहुत सारे उनके देखने के लिए एग्जिबिट्स हैं और पिक्चर्स हैं और रीडिंग के लिए बहुत सारा मटेरियल है. And we are also maintaining, we are actually maintaining 7 different biodiversity parks in Delhi only. So you will find that all these parks, they are in the different corners of Delhi, and all those corners were the degraded, degraded land, you can say, or degraded pieces of land, and they all are restored beautifully, right? So with this, I am ending this virtual visit. It was very disturbing, I know, because of the poor internet connection, but I hope that situation will get better soon, and you will come in person, and you will come along with your family or your teachers. It is free of cost for everyone. Those who want to visit this park, you just need to take a prior permission, or the phone numbers and all are available on the websites. You can take the phone numbers from there. You can fix your appointment so that we can arrange a person for you, and you can visit the park in person. So any of you, if you have anything to share, to speak, you can ask your questions. You can write in the chat box as well. Student, if you have any doubt, please. Ma'am, I just want to ask, it has been almost 2 years after the lockdown. So what are the changes Sir, you आपकी have आवाज observed? मुझे थोड़ी कम आ रही है. Just a second. Is it audible, ma'am? हाँ, अब बेटर है सर. हाँ, मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि 2 साल हो गए हैं लॉकडाउन लगे हुए, तो क्या चेंजेस आए हैं कुछ यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में? क्या नंबर ऑफ जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा आ रही हैं या ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है? कुछ चेंज हैव यू ऑब्जर्व आफ्टर लॉकडाउन? बिकॉज हम लोग नहीं आ पा रहे हैं वहां पर, आप आए कुछ, इफ यू हैव ऑब्जर्व समथिंग डिफरेंट. जी सर, जी बिल्कुल. जी सर. सर, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम थी, बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब तो वर्कर्स भी कम आ रहे थे. सो एट दैट टाइम वी फाउंड दैट अ लॉट ऑफ एनिमल्स जो मतलब इतने बड़े ग्रुप में सामने नहीं आते थे, क्योंकि दिन भर तो यहाँ लोग रहते हैं, जैसे विजिटर्स हो गए या वर्कर्स हो गए. सो दे ऑल वर वेरी एक्टिव, और वो बिल्कुल आपके मतलब सामने तक आ जाते थे. उस टाइम ऐसा था कि मतलब जैसे ह्यूमंस तो नहीं थे यहाँ पार्क में विजिबल, तो वो उनके लिए बिल्कुल फ्रीली था मूव करना सब जगह. एंड बटरफ्लाईज का काउंट बहुत अच्छा हुआ सर. जो समर्स में हमें बटरफ्लाईज दिखती थी, शायद वो पॉल्यूशन कम था एयर में, और जैसे व्हीकल्स वगैरह तो मूव नहीं कर रहे थे, साउंड कम थी, तो बर्ड्स की आवाज और बर्ड्स का आपस में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा था. और कुछ स्पेसिफिक बटरफ्लाईज हमें बहुत अच्छे से दिखी सर. और अब भी आप आओगे तो एनिमल्स अभी भी बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं. उनको वही फेज लगता है कि ये लोग तो अब कम है, तो हम जहां मर्जी जिस कॉर्नर में भी जाएं, ऑफिस के बिल्कुल पास तक, जैसे बिल्डिंग तक, सामने गाय का हर्ड हमें दिख जाता है, डेली दिख जाता है. तो सीमेंट ब्रिज पे जैसे पहले बहुत हलचल रहती थी क्योंकि लोग इस टाइम पे आते थे, अब नहीं आ रहे. तो सीमेंट ब्रिज पे पूरा दिन आपको मॉनिटर लिजर्ड लेटा हुआ मिलेगा. आप जाइए, आप फोटोग्राफ्स लीजिए, वो हिलेगा भी नहीं वहां से, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मतलब ज्यादा डिस्टरबेंस मुझे नहीं करेंगे. और बर्ड्स का भी कुछ नई बर्ड्स हमने सर इस दौरान देखी, और छोटी बर्ड्स
और अभी वेरी सून वी विल पोस्ट पिक्चर्स ऑल्सो ऑफ दोज बर्ड्स। तो जो अभी तक हमें नहीं दिखती थी, अब शायद वो शांति की वजह से सुनाई भी देने लगी उनकी कॉल, और दिख भी रही हैं, राइट? Yes, ma'am. No, ma'am. Every alternate days we are getting articles in Times of India about Yamuna Biodiversity Park. New visitors are there. So almost 1 or 2 days in a week we are getting articles on Yamuna Biodiversity Park in Times of India. So we can also Yes. observe and we can also feel that a lot of diversity is there, and more our birds are coming. Yes, sir. Any other question any student want to ask? Just a minute. A student is asking, is it safe to go in the forest at night, as trees also inhale oxygen at night? So will we face any problem in breathing? नहीं, ब्रीदिंग का तो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी, बट नाइट में आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे, इट इज नॉट अलाउड एक्चुअली। तो 5 बजे के बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं, और सिर्फ गार्ड्स होते हैं कुछ कॉर्नर्स में। बाकी जो आपने ब्रीदिंग वाला बताया, इट इज नॉट, आई मीन आई एम नॉट श्योर वेदर के जो ट्री है वो पूरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीजन ले लेंगे और आपके लिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट में वो ट्रीज, ठीक है, वो जो साइकिल दिन में चलती है उससे थोड़ा सा रिवर्स कुछ चलता है, बट ऐसा नहीं है। अब लोग जब फॉरेस्ट में जाते हैं, दे स्पेंड द होल नाइट इन डिफरेंट पार्क्स इन कॉर्बेट एंड ऑल, तो वो सब जिंदा ही वापस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाएंगे। हाँ, सेफ्टी हो सकती है कि नाइट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स से आपका शायद एनकाउंटर हो जाए, तो वहां पे आपको कोई हार्म ना पहुंचे। सो बट अदरवाइज विद प्लांट्स एंड ट्रीज ऐसा कोई इशू नहीं आता कि वो सारी ऑक्सीजन ले लेंगे और आपको नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट सेम। मैम मुझे जो एक क्वेश्चन और लग रहा है, वो आई थिंक स्टूडेंट्स थोड़ा सा नहीं जान पाए कि कैसे ये बैरन एरिया को आपने दोबारा से अप्रोप्रिएट बनाया। तो आई थिंक थोड़ा सा सर मैं briefly आप दोबारा बता सकते एक्सप्लेन करती हूँ। उस टाइम पे शायद थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा। देखो, जब यहाँ पे लैंड का सिलेक्शन हुआ, तो इनिशियली हमने एक कॉर्नर में बहुत सारे प्लांट्स लगा के देखे जो दिल्ली के ही फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे जिसमें आपका जामुन हो गया और आपका एल्बीजिया के प्लांट्स हो गए, आपका जैसे महुआ हो गया, ठीक है, ढाक हो गया, तो ये सब हमने लगाए और वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाए, और विद इन 10 डेज और 15 डेज के अंदर अंदर वो सब धीरे धीरे सूख कर मरने लगे, ठीक है। अब रीजन ये था कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। जब हमने सॉइल को चेक किया तो नमक, अब बहुत ज्यादा नमक अगर हम आपको भी दे देंगे खाने के लिए तो आप उसको वॉमिट आउट कर दोगे ना, आप नहीं खा पाओगे। तो प्लांट्स के साथ भी ये हुआ कि उनके अंदर जो पानी था वो सारा जो था वो नमक की वजह से, वो तो प्लांट्स जो थे वो अल्टीमेटली डाई कर गए। तो जो फर्स्ट रीजन था फर्स्ट है, और सॉल्ट कम करने के लिए ऐसे प्लांट्स लगाए जो नमक में ही ग्रो करते हैं, ठीक है, जैसे सूडा फ्रूटिकोसा है, और बहुत सारे ऐसे और प्लांट्स थे, और कुछ ग्रासेस हमने सर्च करी, लेप्टोक्लोवा फस्का, ये सब ग्रासेस जो नमक वाली जगह पे उगती हैं, ठीक है। और उन्होंने नमक को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, फिर उन प्लांट्स को ऊपर से आप काट दो, जब उसने नमक ले लिया फिर वो दोबारा से लीव्स आएंगी, वो सॉल्ट को लेंगी। तो इस तरह से कुछ ईयर्स के बाद कुछ एक पैच में से सॉल्ट जब कम होने लगा, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं पीएच को। देन आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस्ड सम ग्रासेस। जब ग्रास अच्छी हुई, ग्रास ने और उसके अंदर जो है इनपुट्स ऐड करे, तब हमने और जब नेटिव प्लांट्स लगाए तो वो सरवाइव कर गए, ठीक है। अभी भी ये चैलेंज आता है, अभी भी नमक पूरा कम नहीं है। अभी भी आप जब समर में कभी आओगे, आप देखोगे कि आपको जगह जगह जहां जहां पानी इवेपोरेट हो गया, वहां आपको नमक का पूरा क्रस्ट दिखाई देगा, ठीक है। और जब ट्री हमारा एक अच्छी हाइट ले लेता है यहाँ पर, तो अब जब वो ऊपर बढ़ रहा है तो अंदर भी उसके रूट्स जाएंगी, तो रूट्स में उसका सॉल्ट टच होने लगता है और वो फिर ट्री धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं, ठीक है, एंड वी आर लुकिंग फॉर इट कि हम इसको कैसे और जो है इसको हम सिक्योर करें कि ये नमक और कम हो, या तो ये पानी के साथ ही कम होगा, क्योंकि अब पार्क में जो है पानी भी बहुत जगह जगह जैसे बहुत टाइम तक रहने लगा है, क्योंकि सॉइल बिल्कुल सैचुरेट हो चुकी है ना। ये है तो फ्लड प्लेन एरिया जो खाली होना चाहिए, जिसमें पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट। आई ma'am. होप Sure, ma'am. हाँ, दिस विल बी Anyone, मोर। any more question?
if not there, ma'am, I would like to thank Dr. Fayad sir for giving his valuable time to us. And I would also like to thank you, ma'am, for joining us, for connecting with us. And I really appreciate the effort you people are doing, University of Delhi is doing, and Professor Babu sir is doing. All we are trying to conserve biodiversity. And we also promise you, ma'am, we will try our best. As a teacher, as a student, we will try our best to conserve biodiversity. So thank you very much. Thank you for connecting with us, ma'am. थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी सर. इतना बड़ा ग्रुप आप एक साथ सबको Sure, लेकर आए और इतना sure. Ma'am, it will be पेशेंटली good for us also. जी. Yeah, and I must say that your students and you are very, I mean, patient कि आज इतना disturbance वैसे कभी भी नहीं हुआ सर. और अभी भी power cut हो गया end में. I don't know what was the reason behind all these things. Otherwise, from 2020, we are regularly we are giving the virtual visits, and we have covered students in more than 2-3 lakh students we have covered. But sometime it happens. But yes, for sure, मैं चाहूंगी सर पार्क खुले, स्टूडेंट्स आए और इसको फिजिकली इसको पूरा एक्सप्लोर करें. और 2 फरवरी को सर अगर पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए, आई विल शेयर द लिंक विद यू. आप इनको ज्वाइन करवाइएगा. वर्ल्ड वेटलैंड डे पे वी हैव 5 एमिनेंट स्पीकर्स, जिनमें से प्रोफेसर बाबू का भी एक टॉक रहेगा. So they will get to know a lot of things about why wetlands are important. So this is, I mean, first time in the history of Yamuna Biodiversity Park that we are celebrating it virtually. Otherwise हम wetland पर बैठकर ही amphitheater पे wetland के बारे में discussions करते. So that was very interesting part. But unfortunately we have to, now we are organizing it virtually. So ma'am, sure, we will be also part of it, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you. Okay, Thank you all. welcome, welcome.